Hello guys, welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Neha and I would really appreciate if you take a moment and subscribe to my channel below. So in case you guys are wondering ki where am I am right now at the highway because अब हम जा रहे हैं to one of my cousin's place and this is going to be a vlog but something that I'm going to try for the first time. This is going to be a weekly vlog that we are going to try. And we have already headed out and Gauri is out for a loo break and we are going to hit the road back so that we reach Solapur is the place where we are going. वहाँ पे हमें पहुँचना है by 3 o'clock-ish as it shows at the Google map. But yeah, we are on a loo break right now and we are going to leave. So yeah, stay tuned. Say hi. Yes, say hi. Say hi. Casper is super excited. यहाँ वहाँ से भाग रहा है Casper. And if you guys can see Gauri, कहाँ गई? He wants to grab something मंची में, तो वो वहाँ गई है. सुबह early morning निकलना था, but we always have to get late, so we have gotten late already. And yeah, it shows that 3 बजे तक हम पहुँचेंगे. So yeah, so basically even if you're going to reach today, it's going to be a relaxed day. कल जो होगा वो सब हम कल से like wherever we are supposed to go, वो सब कल से हम करेंगे. And I would show you guys where are we exactly going. I think now rather than explaining, you will understand it once you see it, because yeah, somewhat like pilgrim is what we are going on to. Oh wow, Gauri has gotten vada pav. चाय भी लाती है. चाय पण आहे बट ये वाला मस्त बना रहा है चाय. खट 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 का स्पाइसी है भाई. तो स्पाइसी है ना. ठीक है, इट्स नाइस. चलो, शुड वी स्टार्ट? चाय पाहिजे. चाय पाहिजे. अब we'll stop थोड़े टाइम में at a food court so that we can do some breakfast. We are hitting the road. See you in some times. One day later. आपण कुठे आलोय? तू सांग. आम्ही आलो आहोत स्वामी समर्थाच्या मंदिरात. But what is this place? No, let it tell the place. What is this place? What is this place? हे काय जागा आहे? पार्किंग. स्वामी समर्थ मंदिर. अरे बट बाबा प्लेस मला माहिती. जागा काय? अक्कलकोट. हा तर मग अक्कल नाही तुला. तुझी सिप्पर द्यायच्या. So we have come to Akkalkot. This is 50 kilometers far from Solapur where I am currently at. So पहला हमारा first place where we are going to go is Swami Samarth's temple, which is here. Also it is being said कि उनकी जो समाधि है वो भी इसी गांव में है, जो हम वो भी देखने जाएंगे. One of the most pleasant places where you can actually be, and some of the grounded places where we visit every year. So I'll just take you guys through.
got his patty here. त्याला काय म्हणतात? कंदी पेढे. And this is one of the special things that you will get here. And ये उसका strawberry flavor है, which is I wish you could guys taste this. कैसा था तुम लोग का दर्शन? तू बोल। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हमारे यहाँ। हम लोग ने प्रसाद भी खाया, which was so good. I mean, मतलब इतने सारे लोग यहाँ पे आके खाते हैं. Like the footfall is really large over here, but still we managed. टाइम पे हमारे दर्शन भी हो गए एंड टाइम पे हम लोगों ने ये भी किया, लाइक प्रसाद भी हम लोग ने खाया. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द अदर प्लेस वेयर उनकी समाधि है. बट द फीलिंग इज़ ग्रेट. आई मीन it's one of the places that one should visit. So this is my first time here, but Gauri has been here before, right? I have been here before, and yeah, it was great. I mean, it's a good feeling altogether when you come to such places. You feel different. Yes. So that's vibe good. Over here is amazing. The energy this place carries is amazing. And this is what we are going to do for another few days. We are going to go to the places where we go every year basically. But due to some reasons, हम लोग के काफ़ी time बाद break के बाद we are going. But yeah, this. So basically this vlog is going to be about this, where you will be seeing a part of my life which I have never shown you guys before. So yeah, that's what it's about. So we're gonna go to the other place and see you once we get home. And we are back home after a very long day. We are back home. Gauri की excitement क्यों है इतनी? She'll tell you in a bit. But yeah, हम घर आ गए and हमने lunch actually वहीं पे किया था. हम घर आके सो गए. It's actually very cold. I need to go and get my jacket. I'll go and grab my jacket. Gauri आपको बताएगी exactly होने क्या वाला है अभी. Hi guys, so we are on the terrace of this house, and out of the blue लोगों को ऐसा लगा कि so where we went right now, we had pineapples over there, and my brother was like, we can do pineapple grill, and I was like, let's do it. And he had the barbecue thing, he has it, so we were like, तो वो करना है तो उसके साथ चिकन भी करते हैं, उसके साथ पनीर भी करते हैं, everything. And now now all the family is going to come on the terrace. We'll set up the barbecue station, and हम pineapple and paneer and everything will grill, and हमारा dinner आज terrace पे होने वाला है. So very excited for that, because it's a different feeling कि तुम फैमिली के साथ बैठ के बारबेक्यू कर रहे हो, you're having dinner. इतनी ठंडी है बहुत यहाँ पे, so we are all wearing jackets. My नानी is wearing her scarf, like बहुत ज़्यादा ठंडी है. It's very cold. It's really cold. I like this, but the ठंडी. Yeah, the ठंडी is nice, but थोड़ी सी सहन शक्ति के अपने बाहर है, बिकॉज मुंबई में इतनी ठंडी नहीं रहती है मुंबई का. सो या my family is going to have non-veg. As I'm not having non-veg, I have my separate paneer and pineapple grill जो मैं नीचे बनाऊंगी. Little bit hungry, so that's what we are going to do now. खाएंगे. And कल का मैं आपको बता दूँ, tomorrow we are heading to another place. कुलदेव के दर्शन करने हैं हमें. कल हम 2 spots जाएंगे, and another 2 or 3 will go day after. So basically plan ये है कल that we have to leave early morning, so we're gonna have food, do a barbecue, sleep early so that we can get up early, and yeah, tomorrow we have to hit the road back. It is going to be tiring, I can say it already, because we have already come through like 400 kilometers far in the car. So it's gonna be fun though. So let's go up. Hello guys, welcome back. वापस हम ट्रैवल करके आए हैं अभी to Karnataka. We are in Karnataka, and this behind me is the Krishna Nadi. So basically यहाँ पे हमें एक डुबकी लेनी होती है, which we all 4 will do, Mama, me, Gauri and Aryan. So हम अभी वो करेंगे. एंड अपेरेंटली वैसे ही जैसे हम गंगा नदी को डुबकी लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे कृष्णा नदी है, विच इज़ क्लोजर टू द मंदिर. सो बेसिकली वी आर सपोज टू कम योर टेक अ डिप इन द वाटर, समवट लाइक अ होली वाटर.
और यहाँ से फिर हम चेंज करके वी विल गो अहेड टूवर्ड्स दी मंदिर. सो अगेन दिस इज अनदर थिंग which we do, and look at him. Come on. Let's go डुबकी लेते हैं. It's been years that I've been here. I've never taken a डुबकी before. This is my first time मैं करने वाली हूँ ये. And yeah, let's see. It's gonna be quite an experience. Come on. Oh God, ठंडी. चल टाइमपास नको अजून आहे बसले परत अजून गेली आज अरे Oh my God. अरे 2 झाले माझे. तू पूर्ण आहे बघ हे बघ इथं तुला हात लावत अरे बसू का आता? हा बस ओके. पूर्ण जा ओके आजचा झाला पहिला आता थोडंसं असं उभा आता. आता कधी पहिला झाला या आपने अभी जो गेट देखा, दैट गेट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जब बना रहे थे ये तब भी का है ये. एंड इट वॉज बीन डोनेटेड बाय माई फैमिली लाइक सुक्तेज बाय माई ग्रैंडफादर. सो दिस प्लेस इज़ रियली स्पेशल टू अस एंड यू गाइज गॉट अ ग्लिम्स ऑफ इट. सो या अच्छा ती म्हणाला लँग्वेज बॅरियर. तीच करायला लागली कन्नड. हम दूसरी जगह पहुंच चुके हैं. दिस इज दी हनुमान मंदिर. यहाँ पे इन लोगों का फेस्टिवल चल रहा है विच हैज गॉटन ओवर यस्टरडे. एंड गाइस इट इज़ ऑल्सो टू बी सेड दैट ये जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, दीज आर हनुमान फुटवेयर विच लुक लाइक दिस. The next day. एंड वी आर टू आर लास्ट मंदिर. लास्ट स्टेप अभी रात की अभिषेक जो होती है वो हम करने जा रहे हैं. वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दैट स्पॉट. सो वी आर गोइंग राइट नाउ एंड वी विल गेट दैट डन. आई विल शो यू इफ़ आई गेट टू शूट इट इनसाइड. बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी है. एंड दिस इज़ द व्यू so far, and we have to walk all the way inside, and yeah, then the abhishek will happen, जो होती है 9 बजे तक usually. And right now the time is 8 o'clock. We ran out of time due to which we are standing outside right now, but अभी हम जाएंगे and yeah, hopefully we will get to do the abhishek. And yeah, so far it is, we have reached, and this is the main entrance over here. This is the main entrance. The main entrance looks like. और यहाँ से अंदर होके मंदिर है जिसकी अभिषेक अभी चालू है. So we are going to reach there in few 20-30 minutes if ज़्यादा लाइन नहीं है तो.
So yeah, let's go. We just got off and we headed out क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे. एक्चुअली ज़्यादा टाइम तक वो लोग रुकाते नहीं है वहाँ पे एंड आई कुडंट शूट इनसाइड. दैट्स अनदर पॉइंट. अभी हम आए हैं टू अ प्लेस वेयर वी आर गोना ईट फूड एंड या everybody is clicking pictures because it's really beautiful in here and it's so cold. I mean the weather is so amazing. But you want to speak? No, sorry. sorry. So yeah, so we're gonna call it off for this day and hopefully for this video. And yeah, I think this is it for this video. Hope you guys enjoyed it. If you liked it, please like, share and subscribe to my channel. अभी मैं एकदम end करने वाली हूँ अभी on a very edge क्योंकि मेरे को बहुत भूख लगी है. So we're gonna go eat food right now. And yeah, in case you liked it, as I said, like, share and subscribe and see you in the next one. Bye bye.